Good morning, students. Students, today I am going to discuss two different topics. First one is concept of metabolism, and the second one is enzymes. Students, as we know that we have different types of biomolecules inside the living organisms, and there is a fixed turnover of these biomolecules inside a cell. Turnover means these biomolecules are participating in various chemical reactions and forming different types of or another kind of biomolecules. I mean to say that these biomolecules which are present in a living cell are constantly being changed into some other biomolecules and are also made other biomolecules. I mean to say that there is a fixed turnover. Means these biomolecules which are present inside the cell are regularly participating in various biochemical reactions and are forming different types of biomolecules, or different types of biomolecules are combining together and they are forming the previous one kind of biomolecule. It means there is a fixed turnover or a limited turnover of biomolecules inside a cell. Now one question arises that we are talking about different metabolic reactions. Now the question which is going to arise is that, now this what is this metabolism? So students, I want to tell you that all the chemical reactions, all the reactions which are occurring inside a living cell or a living organism can be considered as a metabolic reaction. Means all those reactions, all those chemical reactions which are occurring inside a cell can be referred as metabolic reactions. And one more thing I want to tell you that not a single metabolic reaction can occur in isolation. Means all the reactions which are occurring inside a cell are correlated or they are interconnected. Okay, not a single reaction can occur itself. And these metabolic reactions may be of two different types. These may be linear or circular. Here are two images. In first image you are observing two metabolic reactions, and you are observing these reactions are linear reactions. Okay, in which the in first reaction from A1 to A4, yani A1 biomolecule is participating in a reaction and forming a product A4, while in the second reaction you are observing A1 is participating in a chemical reaction and it is forming two end products or two biomolecules A4 and B2, while the another second one is picture is showing the example of a circular metabolic reaction in which a product participates and forms different biomolecule, or it is a reaction in which a single biomolecule participates and it forms a lot of intermediate compounds, and finally once again these intermediate compounds are converting in the same previous one compound. So we can say that the metabolic reactions uh, may be linear or circular, and as well as they have a fixed rate of reaction as well as a fixed direction of reaction too. Now in the second slide you can see that these metabolic reactions or this metabolism is of two different types. The first one is called anabolism and the second one is called catabolism. Now I want to tell you that what is the difference between anabolism and catabolism. In simple words, we can say that anabolism is a kind of body building concept, while the catabolism is a degradation process. Okay, now what is anabolism? In anabolism, more simpler biomolecules will react together, combine together, and they will form a complex biomolecule. Okay, for example, various amino acids are combining together and they are forming proteins. Okay, this is an example of anabolism. While what is catabolism? In catabolism, a complex biomolecule breaks, ठीक है, and forms simpler biomolecules. For example, respiration. In respiration process, we can say that the glucose molecule, ठीक है, which is having molecular formula C6H12O6 is going to split or going to break down and forms carbon dioxide and water and releases a huge amount of energy. So the another example we can say that digestion of proteins, while the proteins are going to digest and they are forming simple amino acids, this is the example of catabolism. So you are observing here in anabolism, ठीक है, more complex structure is going to form, so we can say that it's a bodybuilding concept. While in catabolism, complex substances are going to break down and forming smaller substances or simpler substances.
ठीक है. सो वी कैन से दैट दीज आर डिस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस और डिग्रेडेशन प्रोसेसेस. ठीक है. सो आई होप सो you understood metabolism. What is the turnover of the metabolism? Means conversion of one biomolecule into another biomolecule. And as I mentioned earlier that all the chemical reactions are considered as metabolic processes or metabolism. ठीक है. Metabolism may be linear or circular. ठीक है. They have fixed rate or direction. ठीक है. And one more thing I want to add that the metabolic flow is called dynamic state. When all the reactions are functioning properly, so we can say that our metabolic rate is in dynamic state. ठीक है. And metabolism is composed of two reactions. Metabolism includes two reactions, anabolism and catabolism. Anabolism means formation of more complex substances from simpler ones, while the catabolism means when the complex substances are going to break down into the simpler substances. Now I am coming to the next point, next topic, and the topic is enzymes. Now students, we are very much aware with these terms enzyme, as we are listening these term enzymes from our very earlier classes. Today I will tell you that what are different characteristic features of enzymes, and what are these, and what are their similarities with some inorganic catalyst or some differences with inorganic catalyst. तो स्टूडेंट्स, आई वांट टू टेल यू दैट एंजाइम्स आर जनरली प्रोटीन्स, यानी एंजाइम्स प्रोटीन के बने हुए होते हैं. एंड दे बिहेव लाइक ए कैटलिस्ट. तो ये कैटलिस्ट का काम करते हैं. नाउ व्हाट इज कैटलिस्ट? कैटलिस्ट इज अ काइंड ऑफ सब्सटेंस विच इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन. यानी वो सब्सटेंस जो बिना पार्टिसिपेशन किए किसी रिएक्शन में बिना इन्वॉल्वमेंट किए रिएक्शन के रेट को या तो बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं. दिस कैन बी रिफर्ड एज कैटलिस्ट. तो एंजाइम्स are also a kind of catalyst, and these are catalyzing the biochemical reactions in a living cell. Now one more thing I want to tell you that each enzyme catalyzes the reaction of one substrate. Now I want to tell you that enzyme are substrate specific. Substrate means कि जिस रिएक्शन के रेट को वो बढ़ाना चाह रहे हैं. फॉर एग्जांपल, अमीनो एसिड्स आर फॉर्म्ड ऑफ प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड ऑफ अमीनो एसिड. तो ड्यूरिंग द डाइजेशन प्रोसेस क्या क्या होता है कि ये प्रोटीन्स ब्रेक होते हैं, एंड ब्रेक होने के बाद ही क्या करते हैं, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड टूटते हैं अमीनो एसिड्स के बीच के और सिंपलेस्ट यूनिट यानी अमीनो एसिड में कन्वर्ट होते हैं. यानी इन पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स के टूटने की जो रिएक्शन है, इसके रेट को बढ़ाने के लिए एंजाइम्स होते हैं, लाइक ट्रिप्सिन है, ठीक है, पेप्सिनोजन है. दीज आर हेल्पिंग इन द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द बॉन्ड्स. तो यानी कि ये जो एंजाइम है सबस्ट्रेट स्पेसिफिक. जैसे ट्रिप्सिन है केवल प्रोटीन को ब्रेक करेगा, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक नहीं करेगा. आई मीन टू से दैट ईच एंजाइम कैटलाइजेज द रिएक्शन ऑफ वन सबस्ट्रेट, एंड दीज एंजाइम रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच एंड टेम्परेचर. अब देखिए, हर एक एंजाइम को अपनी रिएक्टिविटी करने के लिए एक क्या चाहिए, एक स्पेसिफिक पीएच चाहिए, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए. फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू दैट आपने ट्रिप्सिन का रोल सुना होगा. ट्रिप्सिन वर्क्स ओनली इन द एल्कली मीडियम, वाइल पेप्सिनोजन वर्क्स और पेप्सिन वर्क्स इनटू द एसिडिक मीडियम. यानी कि दो अलग अलग एंजाइम हैं, एक पेप्सिन है और एक ट्रिप्सिन है. दोनों आपके प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, बट जो पेप्सिन है वो एसिडिक मीडियम में, यानी उसके लिए पीएच जो है 7 से नीचे का चाहिए. और वहीं जो ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन जो है वो एल्कली मीडियम में काम करता है, यानी पीएच एल्कली चाहिए, यानी बेसिक चाहिए, यानी कि 7 से ऊपर का पीएच चाहिए. यानी दीज आर पीएच स्पेसिफिक. सिमिलरली एंजाइम्स आर टेम्परेचर स्पेसिफिक टू, यानी इनके लिए एक फिक्स टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है जिसपे कि वो ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करते हैं. ठीक है. एंड दीज एंजाइम्स आर यूज टू एक्सेलरेट द रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन. मीन्स ये रिएक्शन के रेट को एक्सेलरेट करने का काम करते हैं. नाउ आई एम टॉकिंग सम अबाउट सम सिमिलैरिटीज of these enzymes with some inorganic catalyst, because in inorganic chemistry we are studying that there are various catalysts which are used to enhance the rate of reaction. So generally, what are the similarities between catalyst and enzyme? I am telling you, catalyst remains unchanged at the end of the reaction and they can be used again. तो whenever a chemical reaction completes, तो वहाँ पे कैटलिस्ट खाली रिएक्शन के रेट को तो बढ़ा तो रहा है, घटा तो रहा है, बट कैटलिस्ट के स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आता है. तो सिमिलरली एंजाइम्स भी जो है केमिकल रिएक्शन यानी आपकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस के रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, बट इनके स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगा. एंड वंस अगेन दे आर रेडी टू यूज वंस अगेन. ओके. रिक्वायर्ड इन फार लेस क्वांटिटीज एज कम्पेयर टू द सबस्ट्रेट. नाउ अब सबस्ट्रेट के कंपैरिजन में, मतलब जिस सबस्ट्रेट को रिएक्शन में इन्वॉल्व होना है, जिसको कन्वर्ट होना है, उसके कंपैरिजन में इनका नंबर जो है वो काफ़ी लेस होना चाहिए, लेस अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं.
ठीक है. Now another feature, they do not initiate a reaction but rate of reaction by lowering activation energy. तो आई मीन टू से दैट कि ये किसी भी केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट नहीं कर सकते हैं, स्टार्ट नहीं कर सकते. अगर केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो गई है उसके बाद उसके रेट को इन्हांस या डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है. बट दे कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी. बिकॉज कोई भी रिएक्शन अगर कंप्लीट हो रही होती है तो फॉर द कंप्लीशन ऑफ द दैट पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन सम एक्टिवेशनल एनर्जीज विल बी रिक्वायर्ड. कुछ एक्टिवेशनल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. अब उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को अगर कम कर देंगे तो कम एनर्जी के एक्सपेंडिचर में ज़्यादा रिएक्शन हो जाएगी. तो इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं. नाउ डू नॉट अल्टर इक्विलिब्रियम ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन. तो ये कहता है कि डू नॉट अल्टर इक्विलिब्रियम ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कोई रिएक्शन है जो कि आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन है, एक प्रोडक्ट दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है और दूसरा फिर पहले वाले पे कन्वर्ट हो रहा है, तो इस तरह की जो रिएक्शन होती है इसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है. तो यानी रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट जो है वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में बने रहते हैं. तो यानी ये रिएक्शन के रेट को बढ़ा तो रहा है, बट रिवर्सिबल रिएक्शन में ये ऐसा नहीं कि एक प्रोडक्ट को ज़्यादा बना दे रहा है और रिएक्टेंट को कम कर दे रहा है, ऐसा नहीं होगा. इक्विलिब्रियम की स्टेट को मेंटेन करके रखेगा. And these catalyst form a complex and this is called enzyme substrate complex. तो यानी जो आपका एंजाइम है सबस्ट्रेट के साथ जाके फिट होता है लाइक लॉक एंड की. तो लेकिन ये कॉम्प्लेक्स बनता है बट बहुत शॉर्ट लिव्ड कॉम्प्लेक्स होता है, लाइक जैसे एंजाइम कर लाइक आपके नॉर्मल इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट करते हैं. नाउ वेयर एज आफ्टर इट वी हैव टू डिस्कस अबाउट सम डिफरेंसेस टू कि एंजाइम्स और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में क्या डिफरेंसेस हैं. नाउ ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स एंड हैव कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन. एज आई मेंशन इन द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट कि ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर. सारे के सारे एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं एंड दे हैव वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. एंड वाइल we are talking about the inorganic catalyst, usually they are simpler or smaller molecules. Second difference, an enzyme catalyzes only a specific reaction, means there is only one kind of enzyme which catalyzes only one kind of reaction. But in case of the inorganic catalyst, one catalyst can enhance or can catalyze two or more reactions too, ठीक है. यानी दो से एक से ज़्यादा रिएक्शंस को कैटलाइज कर सकते हैं. थर्ड डिफरेंस, एंजाइम्स एक्शन कैन बी रेगुलेटेड बाय स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स. यानी एंजाइम्स के एक्शन को स्पेसिफिक मॉलिक्यूल की प्रेजेंस से हम क्या कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं. कोई स्पेसिफिक मॉलिक्यूल अगर इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो एंजाइम्स की जो रिएक्टिविटी है या इन्हांस करने का रेट है वो कम या ज़्यादा हो सकता है. बट इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट के रिएक्शन के रेट को इन्हांस या डिक्रीज करने के रेट को हम रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है. नाउ द लास्ट डिफरेंस, दीज आर मोर सेंसिटिव टू चेंजेस इन पीएच एंड टेम्परेचर ऑफ मीडियम. नाउ एज आई मेंशनड अर्लियर कि enzymes depend on the pH of the medium as well as the temperature of the medium, while there is less impact of pH as well as the temperature of medium on the activity of inorganic catalyst. So in this way we discussed about some similarities and dissimilarities between inorganic catalyst and normally an enzyme, ठीक है. I hope so you understood today's concept. Tomorrow once again I will meet you with the nomenclature of enzyme. Till then, thank you, bye bye and have a nice day.